Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, Jatan sir. How are you today? I'm good, sir. How are you? Thank you for being on our show. Oh, absolutely. The pleasure is totally mine. Uh, Sir, as you're a psychologist, I'll start the conversation with the definition of mental health. What exactly do you think is mental health? So that's a good question, right? So mental health is actually the state of your mental well-being, which means, Kitty, are you happy? Are you satisfied with all of the challenges in your life, and you have the coping mechanisms to deal with the challenges, right? At the end of the day, mental well-being is just about sustainability of the mind, irrespective of the outcomes that life throws at you. It's not easy to define, it's even harder to implement. Uh-huh. Yeah? Can you suggest some healthy coping mechanisms? Basically, I think in Pakistan specifically, so I mean, I do practices in different countries, but gratitude, जिसको हम alhamdulillah कहते हैं. I see a lot of people in this country, जो when they come to my clinics, they talk a lot about, depression and anxiety. But when I tell them, okay, do you have 10 things to be happy for? Yeah. They really have to think. Yeah. So alhamdulillah is a beautiful gratitude token, right? That really helps. And the other part is, to this is, alhamdulillah doesn't have to be for the external factors. कुछ चीज़ें आपकी ज़ात के अंदर की भी है ना, like if you are, gracious, if you are actually forgiving, if you are actually tolerant, if you don't get angry, Yeah. even these skills, you deserve to say alhamdulillah for. Exactly. You're perfectly right. So, can you suggest some unhealthy coping mechanisms? Unhealthy? Yes. Well, I wouldn't recommend any one of them, right? Yeah, I mean, there are unhealthy coping mechanisms that people, adopt और वो कर रहे होते हैं वो चीजें. But can you name such जो आपके पास patients आ रहे हो, clients आ रहे हो, वो करते हैं? हाँ, तो जेनेरिकली हम बता सकते हैं पाकिस्तान में कि लोगों को लड़ना नहीं आता ज़िंदगी से. सो सारा कुछ सिखा देते हैं. वी टीच अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान. वन थिंग वी नेवर टीच, एंड दैट इज़ हाउ टू कोप विद लाइफ इटसेल्फ. क्या हुआ अगर ज़िंदगी का बस ना चला? ज़िंदगी कब किसी के बस में है, राइट? और जब है ही नहीं बस में, तो फिर लेट्स नॉट वरी अबाउट द थिंग्स. आपके इख्तियार में सांस भी नहीं है, तो why to even predict the future when you can not even know the count of your own breaths? Yeah. Sometimes you need to let go. Yeah, so a lot of people who come to me, they don't really know how to cope with life. Yeah. और उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, and sometimes to a point where they're suicidal in nature, which I hope never really happens. बिल्कुल सही. But that's the case. Yeah. अच्छा, डिप्रेशन की आजकल आपके ख्याल से कौन सी कॉजेज है जो मेन आ रही हैं और किन लोगों को ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है? So there's a model called biopsychosocial model, और वो कहते हैं कि depression could be caused by biological neuropathways. ये भी हो सकता है कि you are just born by the wrong DNA or neurological defect है, which actually is causing a lot more depression as compared to regular depression that is from social factors. Okay. For an example, किसी की शादी टूट गई है, बिल्कुल सही. आपके वाले साहब वफात पा गए हैं, घर के हालात ख़राब हो गए, बिल्कुल सही. those are actually the social factors. Cognition ये है कि how you think, how do you interpret the world around you. कुछ लोग जो है ना half empty, half full वाला जो concept है, तो अगर आपने ज़िंदगी को इसी एंगल से देखना है कि कल क्या होगा, इस डर के मारे से, तो those cognitions also can cause depressive symptoms in your life. बिल्कुल सही. अच्छा, विमेन की मेंटल हेल्थ पे भी सर पहले बात नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिवली बात हो रही, होनी भी चाहिए. लाइक हाउ डू यू थिंक कि विमेन की मेंटल हेल्थ किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करती है एक सोसाइटी के ऊपर, अगर उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, घर के ऊपर, उसकी इवन ऑफिस में? A good question. So, one of the things that पाकिस्तान में बात नहीं किया जाता वो ये कि when women actually deliver, they actually go through depressive, cycles. जब delivery से पहले भी they can actually have a pre and post problems, right? एक बच्चा को डिलीवर करने में बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. एंड एक चीज़ जो मैंने पाकिस्तान में स्पेसिफिकली देखी है, एंड दिस इज़ अ सजेशन टू ऑल ऑफ द पीपल आर गोना गेट मैरिड, इफ यू आर married and you are in the process of becoming a father, treat your women very fairly. Treat them with respect. Treat them with dignity, because at the end of the day, women matter. Yes. They exactly matter. देखिए, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he used to stand up for Fatima to Zahra. Yes. I mean, what an amazing concept. How many people stand up for their daughters? So Very the daughter really is important. चाहे वो खतीजा रज़ी ताला अन्हा के रूप में हो, या in the form of your daughters. Everything that a woman does to you has an impact. Let's respect them. Yes. That is an absolutely amazing perspective.
तो सर ओवरऑल हमारे माशरे के अंदर बहुत से और भी मसले मसाइल हो रहे हैं, लाइक सोशियोलॉजिस्ट से भी ये क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि हम लाइफ के पर्सपेक्टिव को किस तरह देखें, लाइक वो हाफ एम्प्टी हाफ फुल वाला कॉन्सेप्ट भी है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, रूटीन्स है कुछ इस तरह की ज़िंदगी भी बन चुकी है, लाइफस्टाइल ऐसे बन चुके हैं। तो ओवरऑल व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए ओवरऑल सुबह से शाम तक की रूटीन में, जिससे आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ अच्छी रहे? So you asked $1 million question. So let's look at the reality of the situation. पत्ती महंगी हो गई है, सर्वाइवल बहुत महंगा है। अगर आपके घर में सिर्फ 2 लोग भी हैं या you have a kid as well, 3 लोग हैं, मैकडॉनल्ड्स में खाना खाना, महीने में एक अच्छी जगह पे खाना खाना, या to actually do something of a financial activity is very hard, right? So life, सड़क पे आप जाके देख लें, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी, बम्प्स इतने हैं कि by the time you get to your office you're just in a bad state. Yeah. So रियलिटी तो ये है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, सोशल फैक्टर्स बहुत हैं, सड़क के हाल देख लें, बत्ती जाती है, पीपल आर नॉट ऑनेस्ट विद यू, अगर आपको कोई गवर्नमेंट इदारे से काम पड़ जाता है, आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम टू द फ्रंट लाइन, बट हियर्स द थिंग, डोंट टेक अवे द लिटिल थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। फॉर एन एग्जांपल, ग्रेटिट्यूड की हमने बात की, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज से तो नहीं कोई रोकता ना, बी काइंड टू अदर पीपल। वो हज़रत अली का आई थिंक फरमान है कि you should treat people in such a way and forgive them in such a way कि you should know कि you should also be treated in that way, कि आप किसी को इस तरह माफ़ करो जिस तरह तुम्हें ये ख्याल आए कि तुम्हें भी माफ़ किया जा सकता है। So we need to go to the basics here, right? Be kind to people. I mean, there's a question I ask a lot of people that come to my clinics, कि when's the last time you actually smiled with your neighbor? When's the last time आपने charity दी? And a lot of those little things that can actually help your mental well-being, लोग नहीं करते। आजकल ये भी कॉन्सेप्ट एक बहुत ज्यादा, लाइक यू बीन इन यूएस, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई अ कंट्री और नेशन, बट देयर आर ऑब्वियसली लाइक स्लोगन्स ऑफ एवरी नेशन के, नहीं प्ले हार्ड पार्टी हार्ड। आजकल वो बहुत ज्यादा है कि आप 6 दिन फुल काम करें, 1 दिन मस्ती करें, बट ये है कि इस कॉन्सेप्ट से मेरा नहीं ख्याल मेंटल हेल्थ आपकी इतनी अच्छी रहती है। वट वी हैव सीन इन पास्ट फ्यू ईयर्स, यूएस में, यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में जितना साइकोलॉजिस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट और जितनी साइकोलॉजिकल हेल्प लाइक लोगों को चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा रही है हमारी नेशन के मुताबिक। सो इन पाकिस्तान, हाउ डू यू सी दिस कमिंग थ्रू ईयर्स, और आजकल पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है ओवरऑल, एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? एक्चुअली आई हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन बिटवीन, बट you can answer. No, sure. So Martin Seligman, he's a professor. Search him out, and he's the father of happiness psychology. And he says it's also an intrinsic value system. It's an individual trait, and it's also a part of the society as well. And he says that people should be happy, irrespective. And happiness is not only a state; it's actually a faith of your life. How do you actually look at life? Can be through the lens of happiness itself. Let me give you another example that's very practical. मैं अपनी ज़ात का देता हूँ. When I got married, and I have a beautiful wife, by the way, we actually argued about something. कुछ साल बाद उसी चीज़ के ऊपर मैंने argue नहीं किया, तो she said कि अब क्या हुआ? मैंने कहा जी कि if I have to still fight with people for the same things, and 10 साल बाद उसी जगह पे कर रहा हूँ, तो I have not grown mentally. राइट, सो फिजिकली एवोल्यूशन की बात ना करो, मेंटल एवोल्यूशन की बात करो। कल इफ देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट मेड यू अनहैप्पी, प्लीज मेक श्योर कि 10 सालों के बाद डोंट लेट दोस सेम थिंग्स बर्डन यू, राइट? फॉरगिव पीपल, माफ करना सीखो, एंड आई टेल यू इट विल टेक अ लॉट ऑफ बर्डन आउट ऑफ यू। अच्छा, एक मैं थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट लूंगा टू अनदर डायमेंशन दैट आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे पूछूं। मटीरियलिज्म आजकल बहुत ज़्यादा आ गया, पीपल आर रनिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स, घर गाड़ी बंगला, ये इस तरह की चीज़ें, ऑब्वियसली दे ब्रिंग हैप्पीनेस। लोग कहते हैं जी पैसे के लिए सारा कुछ है, पैसे से ही दुनिया चलती है। वो हाउ डू यू सी दिस कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली इन द मेंटल स्टेट, के वो किस तरह हमें इफेक्ट कर रही है एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट? सो आई थिंक obviously there is a drive towards materialism and it's actually causing a lot of pains. बट रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम है कि आप सिकंदर आज़म को देखें, जब वो वफ़ात पाया तो उसके हाथ खाली थे, सिर्फ खाली ना थे बल्कि रहम व करम के भी सवाली थे। उसने क्या कहा था? ही सेड कि टेक ऑल ऑफ द डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड और उनको को मेरा जनाजा उठाएं ताकि दुनिया को पता लगे कि सिकंदर आज़म
जो है even the best doctors couldn't cure him. उसने कहा मेरे हाथ बाहर रखना so people can know कि I have nothing that I take from this world. और तीसरे उसने कहा मेरा पैसा बांट दो, लोगों को ये यकीन हो कि I cannot take this, you know, to my grave. People have forgotten the reality of life, you know, and I personally believe कि if we look at the values of people, मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन. मैं एक दफ़ा अपनी एक गाड़ी पे चला रहा था, आई हैड अ सिविक एंड आगे एक ऑल्टो वाला था, ब्रेक नहीं चली एंड आई एक्चुअली यू नो रैम्ड हिम टू हिम. अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर निकला एंड इट वाज माय मिस्टेक. तो मैंने बाहर जाके, बुजुर्ग से आदमी थे, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा जी मुझे माफ़ कर दें, मेरे से गलती हो गई है, तो आप पैसे ले लें जिस तरह भी है. और ही ड्रोव अवे एंड आई केप्ट ऑन फॉलोइंग हिम. तो जैन भाई कुछ देर बाद जब मैंने रोका, मैं कहा सर पैसे तो ले लें, आपने यू नो आई डिड समथिंग बैड, लेट्स एक्चुअली टेक द डील फॉरवर्ड, आई ओ यू सम मनी. कहता है फिर बेटे आपको ये चाहिए नहीं था मुझसे ये सवाल पूछते कि मुझे माफ़ कर दो. मैं कैसा आदमी हूँ कि एक आदमी ने मुझसे पूछा और मैंने माफ़ ना किया. एंड आई देन रियलाइज कि यार एक ऑल्टो वाला, यू नो आई हैड अ बेटर कार, उसकी ज़्यादा डैमेज हुआ है. ही हैड द ऑडेसिटी, ही हैड द बेनोवलेंस टू फॉरगिव मी, राइट. और हम क्या करते हैं, मोटरसाइकिल वाला आ गया, गुस्से में आ जाते हैं, स्टार्ट फॉरगिविंग. आई होप दिस कंट्री रियलाइजेज दैट द ओनली एंटीडोट टू पीस विद इन आवरसेल्व्स इज टू फॉरगिव पीपल, even for the wrong things, specifically. It's a great lesson, sir. So moving towards the last round of our Sure. podcast, it's a rapid fire round. You have to give a word or one-liner answer. Got it. So, what's one healthy coping mechanism everyone should try at least once? Namaz. In a stressful situation, what's the first thing you do to calm yourself down? Breathing. What's one unhealthy coping strategy people often overlook? Unhealthy or healthy? Healthy. Diet. Okay. How important is self-compassion when dealing with tough times? Mandatory. What's one app or resource you recommend for mental health support? Or a book? A book, I would say Friends. I mean, it's not a book, but Friends, dost. How do you balance work-life demands with personal well-being? Good point. I think that people, sorry, it's a little bit No longer there. problem. So देखिए Allah राज़िक है. And people who, and I'm not saying you shouldn't work hard, you should, but believe in the Almighty, believe in the fact that He will give you. वो चूंटी को भी देता है. एक दफ़ा हज़रत अली से पूछा कि देखें जी, मैं अगर एक आदमी को दरवाजे में बंद कर दूं, ताला लगा दूं, तो अल्लाह उसको कैसे रिज़्क़ देगा? तो उन्होंने फरमाया कि अगर उस बंद कमरे में वो मौत दे सकता है, तो यकीन रखना कि वो रिज़्क़ भी दे सकता है. Right? So look at that beauty of Maula Ali on that. So I think you work very hard. We tie the camel, but still have trust in God. Yeah. Exactly. So once you have that trust, I think the baseline will work to a point where the work balance life begins. That was excellent, sir. It was amazing having a discussion with you, and your insights were, very wonderful. And I hope कि हमारी audience को भी इससे काफी फायदा होगा. And thank you again for being on our show. This was the end of our podcast. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum.